dimostra come la performance degli studenti e la loro possibilità di progredire siano influenzati dal clima sociale, emotivo ed intellettuale. Quando non ci sentiamo al sicuro, il nostro livello di frustrazione aumenta, blocca la memorizzazione di informazioni complessi. We envision a world where anyone, anywhere can have access to the world's best education. But what does access really mean? How can we make sure that great education is actually accessible to everyone? That every learner feels included, valued, and heard. By the end of this video, you'll be able to enhance your learners' outcomes and performance by implementing our top 5 strategies for creating an inclusive climate in your course. Here are our top 5 strategies. अपनी मान्यताओं को जांचें। आमतौर पे प्रशिक्षक ऐसा मान लेते हैं कि उनके कोर्सेरा विद्यार्थियों और उनके विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं में काफ़ी समानताएं हैं। Coursera learners, a community of 20 million and growing, come from every country in the world, from diverse educational backgrounds, cultures, and demographics. Let their voices be heard. መሰረታዊ ደንቦች መመስረትና ማጠናከር፣ የማህበረሰብ መስተጋብር መመሪያዎች ተማሪዎች አንዳቸው ለሌሎች ሰፊና የኮርሴራ የስነ ምግባር ደንብ የመድረክ አጠቃቀም መሰረታዊ መመሪያዎች ይዘረዝራል። መምህራን የራሳቸው ደንብ ለማከል ይችላሉ። Разрабатывайте инклюзивный контент и поощряйте инклюзивное поведение. Иногда на атмосферу внутри курса могут повлиять самые, казалось бы, незначительные и бессознательные нюансы. En su propia enseñanza, piense en el posible sesgo inconsciente. Por ejemplo, evite asumir que la figura más poderosa es masculina. 运用到成语或之后，涉及到文化背景的时候。題名と代名詞の性的偏見を避けることが必要です。Überprüfen Sie den Inhalt des Kurses und der einzelnen Modulen. Sind mehrere Perspektiven und Meinungen erwähnt? kellően változatosak a példákban bemutatott helyzetek és ábrázolások? הדגישו את הרלוונטיות של התוכן לחייהם האישיים של הלומדים והלומדות. חישבו כיצד הלומדים שלכם יוכלו להשתמש בכישורים החדשים שירכשו בקורס כדי לקדם את המטרות האישיות והמקצועיות שלהם. Enfin, écoutez vos apprenants. Il s'agit de faciliter un échange régulier entre l'apprenant et vous. Récemment, notre équipe a créé un outil qui permet d'identifier du contenu éventuellement offensif. N'hésitez pas à consulter votre dashboard de cours pour voir si du contenu a été signalé. We hope this video will help raise awareness and create a welcoming, inclusive, and vibrant learning community on Coursera and beyond.